せい、せ、よ、世界、世話する、世界、世話する、主、す、主、主、主人、主人、乗、乗る、乗せる、乗る、乗り物、乗る、乗り物、こう、降りる、降ろす、降る、降りる、降る、じ、ず、こと、家事、食事、仕事、家事、食事、仕事、今日、京、東京、京都、東京、京都。Good job. Number 2. Let's get started. し、じ、使える、仕事、仕方、仕事、仕方、大、たい、変わる、変える、よ、しろ、変わり、時代、変わり、時代、い、以下、以上、以外、以内、以下、以上、以外、以内、低、低い、低める、低まる、低い、住、住む、住まう、住所、住む、住所、住む、体、手、体、大体、体、大体、体、咲く、さ、作る、作文、作る、作文、作る。Good job. いい感じです。次は No.3。Let's get started. し、使う、大使館、使う、大使館、使う、便、便、頼り、便利、不便、便利、不便、利、聞く、便利、利用する、便利、利用する、借、借りる、借りる、どう、働く、働く、元、がん、元、元気、元気、けい、今日、兄、
兄、兄弟、お兄さん、兄、兄弟、お兄さん。Good job. If you feel tired, feel free to pause and come back. もし疲れたら休憩してくださいね。続いて No.4 に行きましょう。Let's get started. こう、光る、光、光る、光、光る、光、席、尺、国、石、石、写、写す、写る、写真、写す、写真、写す、と、冬、冬、節、歳、切る、切れる、大切、親切、切って、切る、大切、親切、切って、切る、別、別れる、特別、別、別れる、特別、別、別れる、よく、力、力、力。Good job. 次は No.5. Let's get started. 勉、勉強する、勉強する。動、動く、動かす。動物、動く、動物、動く。く、渋谷区、渋谷区。い、医者、医学、医者、医学。きょ、ほ、猿、去年、去年。台、タイ、台所、台風、台所、台風。豪、が、か、合う、合わす、合わせる。都合、合う、試合、都合、合う、試合。Way to go. 次は No.6. Let's get started. どう、同じ、同じ。み、味、味わう。意味、味、意味、味。品、品、食料品、品物。食料品、品物。員、店員、店員。門、問う、問い。トン、問題、問題。回、え、回る、回す。2回、回る、2回。
回る。図と測る。地図。図書館。地図。図書館。Good job and keep it up. このペースで頑張っていきましょう。次は No.7. Let's get started. 地図。地震。地図。地震。道。食堂。食堂。場。場。会場。場所。会場。場所。せい。小。声。コア。声。バイ。売る。売れる。売る。売り場。売れる。売る。売り場。売れる。か。げ。夏。夏。席。夕。夕方。夕飯。夕方。夕飯。Good job. 次は No.8. Let's get started. や。よ。夜。今夜。夜。今夜。夜。晩。今晩。毎晩。今晩。毎晩。たい。た。太い。太る。太い。太る。太い。太る。こう。好む。すく。好き。好き。し。姉。姉。お姉さん。姉。お姉さん。まい。妹。妹。姉妹。妹。姉妹。し。始める。始まる。始める。始まる。Good job. 残りやっていきましょう。No.9. Let's get started. じ。朝。漢字。漢字。室。室。教室。教室。寒。寒い。寒い。奥。や。屋上。部屋。屋上。部屋。こう。く。工場。工場。し。市。京都市。市民。京都市。市民。き。帰る。返す。帰る。Now you're here. Way to go. 次は No.10 やっていきましょう。Let's get started. こう。広い。広まる。広める。広い。と。と。炊く。旅。一度。
今度、一度、今度、県、今、立てる、立つ、建物、建てる、建物、建てる、引、引く、引ける、引く、引き出し、引く、引き出し、追う、押す、押さえる、押す、押し入れ、押す、押し入れ、弱、弱い、弱る、弱まる、弱める、弱い、今日、こう、強い、強まる、強める、シール、強い、勉強する、強い、勉強する。Good job! 次は11です。一緒にやっていきましょう。Let's get started! てい、だい、で、弟、兄弟、弟、兄弟、弟、たい、待つ、待つ、心、心、安心、心、安心、心、し、思う、思い出す、思う、思い出す、思う、棒、忘れる、忘れる、急、急ぐ、急に、急行、急ぐ、急に、急行、急ぐ、首、首、首、すごい。首は12です。Let's get started! 悪、お、
悪い、悪い、意味、用意する、注意する、意味、用意する、注意する、所、ところ、近所、住所、台所、近所、住所、台所、じ、持つ、お金持ち、持つ、お金持ち、持つ、今日、教える、教わる、教室、教える、教室、教える、文、門、文、作文、文学、作文、文学、料、料理、料理。次は13です。Let's get started. 方、型、仕方、夕方、仕方、夕方、旅、旅、旅行、旅行、族、家族、水族館、家族、水族館、そう、さ、早い、早まる、早い、ち、遅れる、遅らす、遅い、遅れる、遅い、めい、妙、明かり、明るい、明らか、説明、明るい、明日、明日、説明、明るい、明日、明日、暗、暗い、暗い。You are awesome. 次は14です。Let's get started. えい、映る、映す、生える、映画、映画、春、春、春、中、昼、昼間、昼、昼間、昼、暑、暑い、暑い、曜、曜日、曜日、ゆう、ある、有名、有名、服、洋服、洋服。お疲れ様でした。
नमस्कार दोस्तों। तो वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करी है और उस वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में ऐसा कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की आपस में बातचीत हुई है और ये बातचीत बहुत पॉजिटिव रही है। इस बातचीत में यूक्रेन वॉर के ऊपर सबसे ज़्यादा डिस्कशंस हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को अर्ज किया है कि वो इस वॉर को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दें, वो इस वॉर को एंड कर दें। और जो ट्रंप की अगर आप लेगेसी देखोगे, जब वो पिछला टर्म उनका चल रहा था तो उनका ये रहा है हमेशा कि वो ऐसे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश की है उन्होंने, जहां पर यूएस फंसा हुआ है। जैसे आपने अफगानिस्तान का एपिसोड पूरा देखा तो उसमें ट्रंप ने ही इनिशिएटिव लिया था कि खत्म करो अफगानिस्तान, मुझे कोई भी यूएस ट्रूप्स की जरूरत नहीं चाहिए मुझे। और दूसरी जगह वो चाहते थे कि सीरिया से भी हम अपने ट्रूप्स को बुला लें क्योंकि वहां पर हमारा कोई काम नहीं है। और कई बार उनका खुलेआम इस चीज़ को बयान आ चुका है कि ये एक वॉर इकॉनमी है और मैं इस पर बिलीव नहीं करता, ना मेरी पार्टी बिलीव करती है। डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन जो हैं वो शुरू से ही इस वॉर वाले एफर्ट में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ था कि अभी आपको पता है कुछ टाइम पहले रिपब्लिकन्स ने ही जो फंड्स जा रहे हैं यूक्रेन के पास उन फंड्स को रोक भी दिया था। डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार कहते हैं कि ये यूएस के लोगों का पैसा है, टैक्स पेयर्स का पैसा है और इसको वॉर पर नहीं लगाना चाहिए। अब हालांकि वो बार बार फ्लिप भी होते रहते हैं, कभी वो बोलते हैं कि नहीं पूरा आयरन क्लैड कमिटमेंट रहेगा पूरा ज़ेलेंस्की को और पूरे तरीके से हेल्प करेंगे। वो तो खैर इलेक्शन कैंपेन के लिए उन्होंने बोल रहे होंगे, अपनी इमेज को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन उनका सीधे तौर पर यही रहता है कि किसी भी तरीके से वॉर में पैसा ना लगे। और वो ज़ेलेंस्की मतलब यूक्रेन को तो वो पैसा बिल्कुल भी नहीं देने वाले। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप के ही एक रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने एक बयान दे दिया था कि क्राइमिया जो कि चला जा चुका है अब यूक्रेन के हाथ से, उसको वापस पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए यूक्रेन को, क्योंकि इससे क्या होगा पूरे यूरोप में एक इशू फैलेगा और फिर ये वॉर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो अब वो जा चुका है उनके हाथ से तो उसको छोड़ देना चाहिए। हालांकि ट्रंप ने और रिपब्लिकन्स ने बाद में उसके ऊपर क्लैरिटी दी थी कि वो ऑफिशियली नहीं बोले थे, वो उनके अपने पर्सनल बयान थे। लेकिन अब अगर कोई इतना बड़ा व्यक्ति ये बात खुले तौर पर बोल रहा है, और मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप के बेटे का भी पोस्ट दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या लिखा है, तो अगर खुले तौर पर अंदर के लोग ऐसी बातें बोले तो उसका मतलब साफ है, ये चीज़ ये बता देती है कि वो सोच क्या रहे हैं, अंदर अंदर बात क्या चलती है। कई बार बातें निकल जाती हैं और फिर वॉशिंगटन पोस्ट में ये रिपोर्ट हुई है, तो उस रिपोर्ट को भी देखने की कोशिश करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से। देखिए, अनअकैडमी ने अभी तक का सबसे बड़ा ऑफर आपके लिए लॉन्च किया है, जहां पर हम आपको 50% तक ऑफ दे रहे हैं। मतलब अब जो हमारी यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस है वो सिर्फ 24,999 है और ये जो ऑफर है सिर्फ नवंबर 16 तक ही वैलिड है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि अगर आप 24,999 रुपये एक साथ नहीं दे सकते हैं और आप उसको पार्ट पेमेंट्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो उसके कई सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 12 मंथ का ऑप्शन है, जहाँ पर 2000 समथिंग पर मंथ आपको लगेंगे। तो ऐसे ही 18 मंथ का भी ऑप्शन है, 24 मंथ का भी है, 30, 36 ऐसे है। और अगर आप इस कोर्स को ऐसे पार्ट पेमेंट्स में लेना चाहते हो तो ऐसे भी ले सकते हो। अगर आप एक वन टाइम में लोगे तो फिर आपको ऑफ भी मिलेगा। तो ऑफ लेने के लिए आपको क्या करना है, जहाँ पर ये कोड अप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं वहाँ पर आपको APYT10 यूज़ करना है कैप्स में, तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हो 50% डिस्काउंट पर। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो वॉशिंगटन पोस्ट ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की बात हुई है, लेकिन अभी तक ये बातचीत पब्लिक में नहीं आई है, पब्लिक डोमेन में ना ट्रंप ने इसको कहा है ना ट्रंप के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने चीज़ के ऊपर क्लैरिटी दी है कि क्या बात हुई एक्जैक्टली। लेकिन ये वॉशिंगटन पोस्ट ने उन लोगों से बात की जो ट्रंप के बहुत इनर सर्कल्स में उनके बहुत क्लोज लोग हैं और कहा गया कि बातचीत थर्सडे को हुई है। उन लोगों ने अपना एनोनिमिटी के बेसिस पर अपना बताया कि भाई ट्रंप और इनकी बात हुई है और ये बात बहुत पॉजिटिव भी रही है। ट्रंप ने पुतिन से बातचीत करके बोला कि देखो, यूरोप में जो यूएस की मिलिट्री है उसका बहुत जबरदस्त प्रेजेंस है और उससे क्या होगा कि ये वॉर कभी खत्म नहीं हो सकता। देखो, रशिया इज नॉट दैट वीक कि वो ऐसे हार जाएगा एकदम से, और यूएस भी इतनी बड़ी वॉर इकॉनमी है, बहुत बड़ी उनकी इकॉनमी है और बहुत बड़ा जो है उनके पास मिलिट्री है, तो वो भी एंड नहीं होगा। तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, वो कभी ना कभी होता रहेगा। तो अगर इस वॉर को एंड किया जाए, अगर आप इसको एस्केलेट ना करो और इसको एंड करो, तो फिर ये वॉर जो है एंड करने के लिए जो स्टार्ट करना है, जो एक स्टार्ट चाहिए, वो हम कर सकते हैं। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ट्रंप के जीतने के बाद इजराइल का भी सेम स्टांस हो गया है। अभी इजराइल ने अपनी जो जीत है वो घोषित कर दी लेबनान के अंदर में। उन्होंने बोल दिया कि ये हिजबुल्लाह खत्म हो चुका है पूरी तरीके से और हमें ऐसा लगता है कि नाउ वी हैव वन दिस वॉर। अब इस वॉर को आगे कंटिन्यू करने का कोई भी हमारा एजेंडा नहीं है। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये कर दिया, हमास वगैरह को तो कतर वतर से निकलवा ही दिया, और दूसरी चीज़ ये है कि वो लेबनान में सरकार चेंज हो जाए, इसकी भी पूरी कोशिश इजराइल ने कर ली है। तो एक बार वहाँ पे पॉलिटिकल चेंज हो जाएगा तो वैसे भी हिजबुल्लाह वगैरह बहुत कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि अभी की जो सरकार है वो इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देती है, इस वजह से ये इतना फल फूल पाए हैं सदर्न लेबनान में। तो ये सब क्यों हो रहा है? ऑब्वियसली बिकॉज यूएस में एक बहुत बड़ा पावर डायनेमिक्स का चेंज हुआ है। तो जो उनका जो इंटरनल सर्कल है ट्रंप का, जिससे बातचीत करी वॉशिंगटन पोस्ट ने, ऑब्वियसली उन्होंने एनोनिमिटी रखने के लिए बोला है, अपना नाम बताने के लिए नहीं बोला है, लेकिन उन्होंने कहा है कि पुतिन से जो बातचीत हुई है वो काफी पॉजिटिव और हो सकता है वॉर एंड हो जाए। जो वॉर पिछले 3 साल से चल रहा है यूक्रेन के ऊपर, वो वॉर अब बहुत जल्दी एंड हो जाए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है एंड हो जाए? देखो, दिक्कत क्या है? दिक्कत है सिर्फ और सिर्फ पैसों की। डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ एक चीज करते, देखो, उनको कोई मतलब नहीं है कि यूएस के बाहर क्या चल रहा है। ही इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इनटू द फॉरेन पॉलिटिक्स की क्या करना है बाहर और क्या चल रहा है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्री के इंटरनल से, और रिपब्लिकन्स की खैर ये इमेज भी रही है कि उनको बाहर से ज्यादा अपनी कंट्री के इंटरनल मैटर से फर्क पड़ता है। जो आप पुराने भी उठाओगे, पुराने भी आप रिपब्लिकन्स को उठा लोगे तो उनका भी यही हाल चाल, उनका भी कुछ इसी तरीके का काम करने का तरीका भी रहता है। तो लेकिन उनको प्रॉब्लम यह है कि जो ये बार बार जो हम बहुत बड़ा पैकेज दे रहे हैं, अभी तक 50 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं यूक्रेन में, लेकिन उसका कुछ भी रिवर्ट नहीं आया है, उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई मतलब, देखो, ट्रंप इज ऑल्सो बिजनेसमैन, और अभी तो इंडिया के ऊपर न्यूज़ आई है कि ट्रंप टावर्स जो है वो बनाने का सोच भी रहे हैं। तो इज अ बिजनेसमैन, उनको जहाँ पे वो पैसा लगा रहे हैं, जहाँ पे वो उसको इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं, तो ऑब्वियसली वो यूक्रेन को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं देख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें एक और हुई है कि कहा जा रहा है कि इस कॉल पर जब पुतिन और ट्रंप थे तो इस कॉल को इलॉन मस्क ने भी यहाँ पर ज्वाइन किया था। वो इलॉन मस्क जिसके बारे में ट्रंप बोलते हैं कि ही इज अ न्यू स्टार इज बॉर्न, और इलॉन मस्क जो है वो अब यूएस के एक नए स्टार हैं, और थैंक यू इलॉन। और जो उनके बीच का रिलेशन है वो तो आपको पता ही होगा। तो इलॉन मस्क ने भी इस कॉल को ज्वाइन किया था। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात इसमें हुई है। अब
ज़ेलेंस्की का इस पे बिल्कुल अलग ही कहना है। ज़ेलेंस्की का कहना ये है कि हमारी ट्रंप से बातचीत हुई है और ट्रंप जो है वो पूरी तरीके से हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं कर सकते। ट्रंप ने कह दिया होगा हाँ तैयार हैं, बट जो उनकी इमेज है और जो उनका पास्ट है उसको देखते हुए ऐसा ही लगता है कि वो बहुत ज़्यादा हेल्प ज़ेलेंस्की की उस लेवल पर जाकर के नहीं करना चाहते जिस लेवल पर जो बाइडेन कर रहे थे। और जो बाइडेन को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है, इसीलिए वहाँ पर भी बहुत हलचल दिख रही है। देखो, जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन के पास जनवरी 20 तक का टाइम है, इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि ऑफिशियली जब तक वो पावर में है वो जितना फंड्स दे सकते हैं, जितना पॉसिबल सपोर्ट दे सकते हैं यूक्रेन को सर्वाइव करने के लिए, उतना दे दें। तो अभी आपको एक चीज़ दिखने वाली है कि इस दिसंबर से जनवरी तक में बहुत ज़्यादा फंड्स और बहुत ज़्यादा एड जो है वो यूक्रेन को प्रोवाइड की जाएगी, जिससे यूक्रेन जो है जो उसका पूरा ईस्टर्न फ्लैंक गया है रशिया के हाथ में, उसमें कुछ रीजन वापस ले सके, ताकि अगर सीज फायर अग्रीमेंट साइन होता है और वहीं पर स्टेटस को लग जाता है तो कम से कम ज़ेलेंस्की के पास अच्छी साइजेबल लैंड जो उन्होंने वापस ली हो, रिगेन की हो। तो अभी आपको एक बड़ा एस्केलेशन मेरे ख्याल से देखने को मिल सकता है कि पूरी तरीके से जो बाइडेन जो है वो यही चाहेंगे कि जितना पैसा दे सकते हैं ज़ेलेंस्की को उतना यहाँ पर चला जाए। अब रशिया की तरफ से इसके ऊपर क्या रिस्पांस आएगा वो देखो। तो देखो, रशिया का अभी तक इस चीज़ के ऊपर कि उनकी ट्रंप से बातचीत हुई है कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन ट्रंप जब इलेक्शन जीते थे तो दिमित्री पेस्कोव जो कि उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है, उनका रिस्पांस आया था कि ये बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल्स हैं रशिया के लिए। पॉजिटिव सिग्नल्स इसलिए हैं क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति चुन करके आया है जो एटलीस्ट पीस की बात करता है, जो सिर्फ एड देने के लिए ज़ेलेंस्की को सपोर्ट करके रशिया के ऊपर अटैक करवाने की बात नहीं करता है। वो बात करता है ना ही रशिया के एग्रेशन और उसकी बात करता है, वो बात करता है एक पीस की कि कैसे पीस हो सकता है यहाँ पर, कैसे यूक्रेन जो है वो निगोशिएट करे, कैसे रशिया से बातचीत करके यहाँ पर सॉर्ट आउट करना चीज़ को। अच्छा, ट्रंप की ये जो बात ये कह रहे हैं दिमित्री पेस्कोव, वो सही भी है। ट्रंप ने अपनी ही कंट्री के खिलाफ एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया था, मैं आपको बताता हूँ। देखो, यूएस की जो वॉर इकॉनमी वो फेमस है कि यूएस में कुछ वॉर कंपनीज हैं जिनका एक नेक्सस बना हुआ है, और दुनिया भर में जहाँ भी वॉर होता है वहाँ पर यूएस क्यों होता है? क्योंकि वो डिफेंस कंपनीज को उस वॉर से बहुत फायदा होता है, बहुत पैसा कमाते हैं वो लोग। इसी वजह से सीरिया में, इराक में जानबूझ करके यूएस फंसा हुआ है, क्योंकि उन कंपनीज को उससे बहुत फायदा है। और वही जो कंपनीज हैं, जो डिफेंस कंपनीज हैं, वो एक तरीके से यूएस चलाती हैं। ऐसी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आपको पता होगा यूएस वॉर इकॉनमी के बारे में। ट्रंप ने इस चीज़ को खुलेआम बोल दिया था। ट्रंप ने कहा था कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं, डिफेंस कंपनीज, जिनको उससे फायदा है, और इनका और जो पॉलिसी मेकर्स हैं इन लोग का एक पूरा नेक्सस है। इसी वजह से ये बात उन्होंने कही थी अफगानिस्तान वाले एपिसोड में। तो उन्होंने कहा था कि मेरी तो कोशिश ये थी कि मैं सीरिया से भी जो यूएस ट्रूप हैं, जो भी बची कुछ 1000-2000 यूएस ट्रूप्स हैं, उनको वापस बुला लूं, क्योंकि कोई फायदा नहीं है दूसरे के वॉर में घुसने का। वहां पर ऑलरेडी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सारे कंट्रीज वहां पर घुस चुके हैं जो आपस में लड़ रही हैं, और ये कभी ऐसे खत्म ही नहीं होगा। और मैं इसलिए भी नहीं चाहता कि हमारे सोल्जर्स वहां पर लड़ें, बिकॉज हमारा और हमारी पब्लिक के जो बच्चे हैं उनके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जो नेक्सस है इसको तोड़ना पड़ेगा। इस नेक्सस के बारे में अगर आप पूरी हिस्ट्री चेक करो अमेरिका की, बहुत कम प्रेसिडेंट ऐसे हैं जो खुले तौर पर इस डिफेंस कंपनी और इनके नेक्सस के बारे में खुले तौर पर बोल पा रहे हैं। इसीलिए आप देखोगे कि ज्यादातर जो डीप स्टेट है यूएस का, वो पूरी कोशिश में था कि ट्रंप हार जाए इलेक्शन, या ट्रंप को किसी तरीके से हरा दिया जाए। और शायद हो सकता है कि ट्रंप के ऊपर जितने अटैक हुए हैं उसके पीछे भी यही प्रॉब्लम हो, क्योंकि उन्होंने पहले इस नेक्सस की बात करी है। अब आते हैं वापस ज़ेलेंस्की के ऊपर। तो ज़ेलेंस्की को सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या फंड मिलेगा कि नहीं। उनके हिसाब से ट्रंप उनको सपोर्ट करेंगे, बट यहाँ पे ट्रंप पुतिन से बात कर रहे हैं, तो उनको फंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसका सवाल ये बहुत सीधा सा सवाल है, उसका सीधा जवाब ये है। आप एक पोस्ट देखना, डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े बेटे ने एक पोस्ट डाला इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे उन्होंने एक पोस्ट डाला जहां पर वो और अपने फादर के साथ वो खड़े हैं, इलेक्शन की कैंपेनिंग चल रही है, और उस पोस्ट का जो कैप्शन है उसमें लिखा हुआ है that you are 38 days from losing your allowance। ये आई थिंक सैटरडे की बात है जब ये पोस्ट यहाँ पर आया, 38 days from losing your allowance, ये चीज़ लिखी है डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने। दैट मीन्स कि बहुत क्लैरिटी इस चीज़ पर कि अंदर ये सब बात चल रही होगी, जाहिर बात है, तभी उन्होंने लिखा है। तभी वो रिप्रेजेंटेटिव जो ट्रंप के थे वो भी ऐसी बात बोले थे कि वापस लेने के लिए क्राइमिया को नहीं देखना चाहिए। तो मतलब अंदर ये बात खुलेआम चल रही है, एंड इट इज अंडरस्टूड कि ज़ेलेंस्की को वो आयरन क्लैड कमिटमेंट जो बाइडेन से मिलता है वो ट्रंप से बिल्कुल नहीं मिलने वाला, एंड ही इज गोइंग टू लूज ऑल हिज अलाउंस। और अब जल्दी ही अग्रीमेंट आपको सीज़फायर अग्रीमेंट साइन होता हुआ नजर आ जाएगा जैसे ही ट्रंप पावर में आएंगे। तो आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। ध्यान में रखिएगा, यूपीएससी सब्सक्रिप्शन के बारे में 50% ऑफ आपको दिया जा रहा है। APYT10 कोड है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, उस पर जाकर के आप एक बार चेक कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Cubed with features like rear AC vents, rear seat armrest, and fast chargers. Further, enhancing the driving experience are features like cruise control, keyless entry, and push start, to name a few. The all-new Desire now comes with the largest display audio in the segment, the 9-inch Smart Play Pro Plus infotainment system with interactive voice assist. It is powered by Archimedes SoundSense technology for an immersive sound experience. It seamlessly ensures on-the-go wireless connectivity through Android Auto and Apple CarPlay. With the added convenience of wireless charger, you can keep your devices powered on the go. The new Desire now comes with Suzuki Connect, which offers 40+ intelligent features. The palette of 7 body colors is designed to cater to a wide range of customer preferences. Since individuality and self-expression are important to the new age customer, we have curated 2 unique accessory packages called Coperico and Chromico for a whole new level of personalization. From captivating exteriors to a feature-packed interiors, from uncompromised safety to segment-first technologies,
The dazzling new Desire is a manifestation of Maruti Suzuki's dedication to provide unparalleled joy of mobility. Ladies and gentlemen, presenting to you the best and beyond, the dazzling new Desire. Thank you and have a great day ahead. Thank you so much, Sandeep Ranasan, for that insightful product presentation. Dear friends, I'm sure with all those details, your senses have been heightened and your desire to see the real product is definitely on. The wait is over. Get ready for that dazzling new Desire as it's ready to roll out right about now.
exemplary confidence and optimism. The dazzle that is not limited to any age group or location. The dazzle that is set to rejuvenate the sedan segment of the country. There it is, ladies and gentlemen, the dazzling new Desire that is truly stylish and absolutely stunning. For those with the drive for the best and beyond. What a grand revelation it is. After this spectacular launch, it is now time for a photo opportunity. I'd like to request Takeuchi-san and Partho-san to kindly come up on stage. Can we see big smiles and thumbs ups? May I request the two gentlemen to kindly move to the car? The beautiful red dazzling Desire. The all-new dazzling Desire deserves big smiles and a big thumbs up. May I request Takeuchi-san and Partho-san to kindly move over to the blue dazzling Desire. Needless to This say, is the big all-new, the smiles fourth and generation thumbs up. Desire. We've got it in Goa with us for a day. Now, as of now, we can't tell you exactly what it's like. There's a lot of color also shared with. So here at the rear, let's take a look inside the boot. 300 slot as well. Down below in the comments. And of course, I know this makes for the perfect picture, which is why I'm going to request Takeuchi-san and Partho-san to come back in the center so that our photographers can get another shot and a wonderful, wonderful picture. The new Desire has received global recognition with the GNCAP 5-star rating. As an icing on the cake, there are several friendly infotainment and telematics features that makes life beautiful. Corner of the screen, 10 pixels X, 10 pixels Y, just moves us a little bit off the edge of the screen so it looks a little bit better. All right, now we should be rendering the time. So let's see if that works by running our code. And notice that we have our time. It is counting up, and it will keep displaying whatever the current time is. Awesome. So now that we have our time, the next thing we need to do is generate some projectiles. Now we're going to generate our projectiles on kind of a counting increment where the increment at which we generate them gets shorter and shorter, meaning we kind of generate more of them
more quickly as the time progresses, making the game a little bit more difficult. Obviously, you can mess with this mechanic however you'd like, but I wanted to show you how we do some kind of dynamic rendering here, so we're not just putting one on the screen, say, every 1 second. It gets a little bit more complicated than that. All right, so to do this, we need to have a few variables. We're going to say star. I'm going to call those little projectiles stars, even though I know they don't really look like them. I'm going to say star. Maybe I was wrong and you were right, but I don't really want to have this fight. I just want to feel like I belong. Add increment is equal to 2000 milliseconds, which means the first star that we add will be added in 2000 milliseconds. Then we are going to have star underscore count equal to 0, and this is actually just going to be a variable that tells us when we should add the next star. I know it's a little bit misleading. It's not telling us how many stars we have. It's going to be counting so that we know when we get to this increment and when we should add another star to the screen. Okay? Then we're going to have an array here called stars, or a list, sorry, and this is where we're going to store all of our different stars that are currently on the screen. Then we'll draw all of them that are inside of this list onto the screen. Okay, so at the top of our code here, although it doesn't really matter where you put this, we're going to generate some of our stars. So we're going to actually say that our star underscore count plus equals clock.tick. Now, I know this seems a little bit weird, but what clock.tick does is return the number of milliseconds since the last clock tick. So you need to actually do it in this way to keep track of the time accurately. In my case, it's about 16 or 17 milliseconds between every clock tick, but for you, it could be slightly different. So we say star count plus equals clock.tick, and what this is doing is essentially counting how many milliseconds have occurred since, again, the last clock tick. You could use this elapsed time variable, but it gets a little bit more complicated based on how we're kind of keeping track of the time with this variable. I know that I'm probably confusing you a little bit. Again, this is just returning number of milliseconds since last tick, so you do that to keep track of kind of the precise time in this variable. All right, now we're going to say if the star count is greater than the star add increment, then we're going to add stars to the screen. So hopefully you see what I'm doing here. This is 2000. The star count is 0. As soon as we have 2000 milliseconds that have elapsed, then we trigger this and then we add a star. Now I'm actually going to add 3 stars at a time, but you could add a random number, you could add 20 stars, you could add 1 star, you can add as many as you want to the screen. So I'm going to say for underscore in range 3, because I want to add 3 stars. And by the way, this is a placeholder variable that you use when you don't want to have an increment variable like I. I don't actually care about the iteration count. I just want to do something 3 times, so I say for underscore in range 3. Okay. Now, I'm going to generate the X position of my star because I want to randomly position them on the screen. So I'm going to pick a valid X coordinate, and then we'll choose a Y coordinate and place the star on the screen. So star X is equal to random dot rand int and then 0 width minus the star underscore width, which is a variable that I don't believe we've defined yet. So let's add that variable to the top of our screen here and make
sitting down in a restaurant, waiting for the check. We had made love earlier that day with no strings attached, but I could tell that something had changed. How you looked at me then. Krista, come right back. I've been waiting for you to slip Variable that I don't believe we've when you lit the candle. And on the defined yet, so let's add that variable to dancing with me now. the top of our screen. And I'm taking pictures of you with flowers on the wall. Think I like you best when you're dressed in black from head to toe. Think I like you best when you're just with me and no one else. Krista, come right back. I've been waiting for you to slip back in bed when you lit the candle. In here and make that equal to, let's go with 10. Okay. So again, star underscore x is equal to random.randint 0 with minus star width. Now, the reason we're doing this is because we want to pick a random integer in the range of 0 and width, again, minus the star width, which is a valid position for the x coordinate of the star that we are generating. Okay, we can do this because we imported the random module at the top of our program. We're then going to say star is equal to pygame dot rect, and we're going to place this at the star underscore x and at the negative star underscore height, which is another Stay with me. I don't want you to leave. variable that we need to define. So let's go here and make this equal to 20. Okay. Now, the reason I'm doing this is I want my star to start off of the screen and then move down. So when I do negative star height, that means I'm going to get a negative y coordinate. So my star starts not at the top of the screen, a little bit above the top of the screen, and then as we move it down, it looks like it enters the screen. If instead you were to put 0 here, then you would see the star kind of appear right at the top of the screen and then start moving down. Instead, we want to see it slowly enter the screen, so we do that by giving it a negative height to start. Okay, next we pass the star width and the star underscore height. And now we add this star to our stars list. So we say stars dot append star like that. Okay, so this now generates 3 random stars for us. Now that we have that, we want to adjust
our star add increment, and we want to set our star count back to 0. So we say star count equal to 0, and before that, we're going to adjust this increment so that it's slightly less than what it currently is, so that we generate stars faster. To do that, we say star add increment is equal to the maximum of 200, and the star add increment minus 50. Okay, so let's just quickly go through what I did here. I'm essentially saying with this maximum function, pick the maximum value out of this and 200. Now, this makes it so that the minimum star add increment I ever have is 200, right? So if star add increment is equal to 200, rather than setting it equal to 150, then 50, then 0, then negative 50, we always keep it at 200, okay? So this is just the minimum value. That's what I'm setting here. Then, in most cases, what will happen is since star add increment is going to be much larger than 200, in the starting case equal to 2000, we're going to subtract 50 milliseconds so that every time that this runs, 50 milliseconds kind of faster, we generate another star. Hopefully that makes a little bit of sense, but we go from 2000 to 1950 to 1900, etc., and it gets faster and faster and faster the time in which we're incrementing a star. And you can obviously adjust this and change it to be whatever you want. Okay, so that will generate our stars for us. However, if we want to see our stars, then we actually need to draw them on the screen. And we need to move them downwards. So we're going to do both of those steps before, unfortunately, we can see what's going to happen here. So now after we generate our stars, after we do our events, and after we do our movements, we're going to move our stars. So we're going to say for star in stars, and then we're actually going to make a copy of this stars list. The reason I'm making a copy of the stars list is that I'm going to be removing stars from this list that have hit the bottom of the screen or that have hit our player. If that happens, if they hit our player, hit the bottom of the screen, we want to get rid of them because we don't want to be rendering them and moving them when they're not on the screen. That's a waste of resources. So I need to make a copy of this list because if I'm modifying the list while I'm working on it, I can get all kinds of weird errors. So rather than doing that, I make a copy of it so that I'm looping through the copy, and then I can adjust or mutate the original list as I go through this for loop. So I'm going to say star.y plus equal the star velocity. Okay, so this moves the star downwards in the y direction by this velocity because we're adding to it, meaning it goes down. Then I'm going to say if the star.y is greater than the height of the screen, then what I want to do is remove this star. So I'm going to say stars.remove. And then I remove the star, which will remove the first instance of this, or really the only instance of it, from the original stars list. Nice.
Next, we're going to say elif star dot y is greater than or equal to the player dot y and the star dot collide rect player. Then we are going to remove the star again. So stars dot remove star, and we're going to say hit is equal to true. And we are going to break out of this loop. Okay, you'll see why I'm doing this in a minute. But essentially what we're doing with the second elif statement here is we're saying, okay, if the star.y was not greater than the height, then we're going to check if the star.y is greater than or equal to the player.y. Now, the reason we're doing this check here is because I only want to check to see if this star is colliding with the player if the star is at the bottom portion of the screen. So if it's in the same Y kind of plane as our player. If it's not, there's no point in me checking if the star has collided with the player, right? That just doesn't make any sense, because if it's way above the player, I don't need to check for collision because I know it can't be colliding. And in fact, I need to add something here, star.y plus star.height. Because again, we need to account for the fact that the star has a height, not just a y coordinate. Okay, so we say star.y plus star.height. If that is greater than or equal to the player.y, then we're going to check if the star has collided with the player. So since both of these are Pygame rectangle objects, that allows us to use this fancy function called collide rect, which just tells us if two rectangles have collided. So if they've collided, then I want to remove this star because it hit our player, and I'm going to set a variable hit equal to true, because we'll then look at that variable later on to see if our player has been hit by a star. Okay, now we just want to go up here and say hit is equal to false, just so that if we do end up checking this variable later on, we don't get an error where it's undefined. Okay, so I know I've done a lot there, but we started by generating all of our stars. We then moved all of the stars. Now we need to draw all of the stars. So I'm going to pass my stars to this draw function. I'm going to go to my draw function, and I'm going to start drawing them. Now, it doesn't really matter where you draw them, but if you draw them after the player, they'll appear on top of them. If you draw them before the player, they'll appear behind the player. So pick where you want to draw them. I'm going to do it after so you can see it on top of the player. Okay, so fairly straightforward here. We're going to say for star in stars,
searching for a trail to follow again. Pygame, dot draw, dot rectangle, on the window with the color white, our star. Okay, straightforward, same as our player. We're just doing it for every single star. All right, so that's going to be a majority of the game done. Let's run it, make sure it works, and then we'll handle showing something on the screen when the player gets hit by a star. Okay, so let's run, and you should see that we get some stuff appearing on the screen, but it looks like we got an error. So what is our error here? It actually didn't show up for me. So let me run this one more time, and we'll wait for the error message, and it says star velocity is not defined. Okay, so that's a variable that we need to define. So let's say star vel is equal to 3. Again, feel free to adjust that to be whatever you want. Okay, now let's try it and see if our stars start moving. And there you go, 3 stars are generated. And they start by it. 3. Okay, so that's, and we get some stuff appearing on the screen. Make sure star angle here. I'm gonna for the player I draw function stars. So I'm gonna pass my stars to this draw function. I'm gonna go to my draw them, dot draw, star, and then we'll and you should see that we get some stuff appearing on the screen, but it looks like we got an error. So what is our error here? It actually didn't show up. Our vel is equal to on the screen. Perfect. And notice that they kind of disappear when they hit the player or when they hit the bottom of the screen. Okay, fantastic. So now the last thing we need to do is just put something on the screen that says, hey, you collided with a star, you lost the game, and now we'll be finished. Okay, great. So to do that, we're going to go down to the bottom of our while loop here. And before our draw statement, we're going to check if the player was hit by a star. So we're going to say if hit, then we're going to do something. Now, really, all we're going to do is just generate some text that says you lost, put it on the screen, kind of delay for a few seconds, and that'll be it. And if you want to adjust this game and kind of make it longer, add levels, you can do that from here. So we're going to say lost underscore text is equal to our font dot render. You can make a different font if you want. I'm just going to use the same one. I'm going to say you lost exclamation point,
and then 1, and then the color of white. Okay, now I'm going to draw this on the screen. So I'm going to say win dot blit the lost underscore text, and I'm going to draw this in the center of the screen. To draw this in the center of the screen, we do the following. We say width divided by 2 minus the lost underscore text dot get underscore width, which is a method you can use to get the width of your text object, divided by 2, and then we do the same for the height. So we say height divided by 2 minus lost underscore text dot get underscore height divided by 2. Okay, so let me just quickly explain why we're doing this. We want this in the middle of the screen, but we need to pick the top left-hand position of the text that puts it in the middle of the screen. So you might naively think that you can just do width over 2 because that's the middle position of the screen, but you can't. You actually have to get the full width of the text object and then divide that by 2 and subtract that from width over 2. Right? So if we have, can I kind of run this? Let's run this and see. So let's say 500 is where my mouse is, right? If I draw my text, it's going to go this direction.